Okay, जी Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And this is chapter 3, and this is what we are so far going to cover. It's kind of summary. And okay. And just have a paper and pen and take one step from today and for the next time. Let's bring that ilm into action, amal. And a humble request for having an open mind, open heart, and take good stuff and leave the bad stuff. And let's just contemplate any of your favorite Allah's name. And is there a link between Yasami and Yabasi with our senses? And this is just a throwaway. Okay. What is there in Surah Al-Hakum Al-Takasur? It is equal to 1000 ayat. And this is linking this hadith with EI. Okay, the neighbors, the guest who came to our house, and specifically the last one. Say positive or remain silent. इफ ओनली वी नो जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं और वो हमारे घर की कहते हैं किस तरह से नेगेटिव स्टफ ले जाते हैं जो हमारे ऊपर मुश्किल टाइम आना होता है so they are indeed a blessing. So chapter 3 is consciousness creates all. He starts with the whole book revolves around these three: water philosophy, water quality, and anthroposophy. And it's a spiritual movement. And he starts with the crystal, linking with the crystals with the mirror, and then linking it our mirror so we have seen the crystals, and those shows they're like a mirror, and mirror of souls. So he's putting out the questions: okay, what do our souls look like, and how should souls look like, and does water has the answer to these questions? And then there is a periodic table. He starts with the periodic table, like saying, it's like this book is written in 2000, 2001. So at that time, scientists says, there are 108 triple one elements. और उसमें से राइटर कहता है कि 108 ही सस्पेक्ट्स कि जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ द periodic table हमारी बॉडी के अंदर हैं. And he says कि so far 90 उसमें से verify हो चुके हैं. That is the most highest number so far सिर्फ human creature में as compared to the animals and plants. And he says कि human body they say कि human body is a universe within itself, so it makes sense कि we carry these all elements inside us. Then he narrates Buddhism point of view कि वो कहते हैं कि human born with 108 earthly desires: confusion, attachment, jealousy, vanity, जो kind of so far इधर वाले तो नफ्स वाले लग रहे हैं कि torture is throughout our lives, like that's a test. That's why life is test. और वो कहते हैं क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो 108 earthly desires हैं वो काउंटर पार्ट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो वो आगे जाके डिजायर करे. फॉर एग्जाम्पल अगर एंगर है तो वो लेट से हो रहा है. सो कैन वी रिलेट इट आगे EI. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गुस्सा आता है तो मेरे अंदर वो कौन सा एलिमेंट है. इफ आई गो सैड, सो वो कौन सा एलिमेंट है. Then he says, same the room Iqbal, all talking about the same one point that it's revolving. You are the universe experiencing itself. And this is just an idea to throw away. These are the highest elements जो हमारे अंदर हैं: oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, and then there are essential elements, and then there are trace elements. But the point here is कि these all are the things जो हम day to day अपनी life में कर रहे हैं. आप सुबह walk कर रहे हो, उठ रहे हो, या और नहीं तो आप सूरज को देख रहे हो. So what is in that those sun rays, आप dust particles नहीं देख सकते until unless specific sun rays आए और फिर आप उसमें उसको देख सकते हो. वाटर, वो कौन सा वाटर के अंदर एलिमेंट है जो हार्ड वाटर बनाता है या गुड फॉर हेल्थ बनाता है. स्विमिंग पूल में क्लोरीन, वो उसे आर्टिफिशियल करके कैसे क्रिस्टल मेकिंग से रोक रही है. वेदर यू आर वॉकिंग एंड अर्थिंग बेयरफुट और आर्गन गैस अगर आपने घर की विंडोज नहीं खोलते तो वो आपके घर में अर्थ से निकलती है, नेचुरली क्रिएट होने लग जाती है. दिस इज ऑल्सो द periodic table of vitamins. यानी हम हर चीज का periodic table इस तरह बना सकते हैं. दिस इज अबाउट द firework. And then he starts about talking about vibrational sound therapy. If we go in the last couple of years of Tesla, he was also working on those vibrational sound therapies, and he even implemented it on himself, and he wanted to do same for other people too.
And what is it is healing sound is it can release energy blockages throughout the mind, body, spirit. Again, the triangle between mind, body, spirit. And the healing could be release can release energy blockages. जो energy blockages हैं, चाहे वो हमारी health की वजह से हैं, चाहे वो हमारे emotion speed breaker हैं, so all that. For example, tuning fork को certain आप करें, so those are good vibrations for your body. And then there was, there are a couple of minerals inside our body. So it was just an example, okay, calcium and then magnesium. Then again, these were there's superego frequencies. That's a whole another topic. But what makes these specific good and not good? And this was what Einstein and Tesla was about. And then the writer says कि कि उसने back there I guess after World War II he went for उसने कहते introduce किया था first vibrational device. So this device was capable of measuring the unique vibrations emitted around people. Just imagine आपके इर्द गिर्द आप उन vibrations का आपको पता चलता है कि positive, negative या those values on those frequency chart. So उससे उसने क्या रियलाइज किया उस एक्सपेरिमेंट से कि वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन इमिट हो रही हैं या वो जो वाइब्रेशन इमिट हो रही हैं दे आर by certain different elements. So for example if we eat the junk food when जो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो they ask in Pakistan do you eat chicken, so what is that in the feed of chicken. तो और इवन these vaccines इन सब के अंदर क्या चीजें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इंड्यूस कराई जाती हैं और वो आगे जाके क्या करती हैं आपके सेल्स ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफेक्ट डालती हैं. Are they using something again referring to hard book and फिर बाद में वो ELF really low waves के through क्या कहते हैं वो उसको trigger करा सकते हैं because everything is vibration. Then he talks about 6 or 7 emotions. For example irritation mercury से होता है जो element है आपके अंदर and thermometer के अंदर भी mercury है. So is it a coincidence? And then the uncertainty is related to cadmium. Anger is lead और आगे जाकर lead को वो Saturn से जोड़ रहा है और इसकी frequency जब आप anger में होते हो आपकी low frequency में होते हो 150 hertz. Despair में आप क्या कहते हैं 50 hertz में होते हो and it is due to steel. And if you go into the sorrow sadness stage that is due to aluminium, its frequency is 75 hertz. जब आप इस emotional state में होते हो grief regret. But what was interesting here was कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइट वेट और आपके विंडोज में यूज होता है, इसके अलावा आपके कुकिंग पैन्स में भी यूज होता है. बट व्हाट ही इज सेइंग हियर इज कि इट कैन लीड टू अल्जाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम की सेम वाइब्रेशन है दैट इज इक्वल टू सैडनेस. सो ऑल दिस पैन्स फार अवे फ्रॉम द नेचर. सो वो जो हमारे विलेजेस में बैक अगर हम जाएं तो वो जो मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है इवन बनाया जाता है. सो देयर वाज समथिंग जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ला रहे थे लाइक इट्स ऑल अबाउट नेचर वर्सेस unnatural stuff. And then there was stress जो आपको जिंक की वजह से होता है बट इंटरेस्टिंगली मेडिसिन में भी होता है. सो और ये मीट चीज पोल्ट्री स्टफ में भी होता है नट्स. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो आपका टेम्परेचर है कोल्ड में ये उन मेडिसिन में भी यूज होता है जो 40% कम कर देती हैं आपकी कोल्ड ड्यूरेशन को. कॉस्मेटिक्स में सनस्क्रीन जो कि इट हेल्प्स स्कैटरिंग द यूवी रेज और स्किन फाउंडेशंस में भी यूज होता है. इट नीड्स टू बी वेरीफाइड कि अगर ये यूज हो रहा है मेडिसिन और इसमें तो इज इट रियली गुड फॉर आवर हेल्थ और नॉट. और स्टफ दैट इज एक्सपोज आउटसाइड तो उसमें एज अ गैल्वेनाइज्ड स्टील की तरह भी यूज होता है स्ट्रीट लाइट्स एंड कार्स में. Then this was the summary जो है ये सब 6. And this was the emotional frequency chart. Like it's your choice whether you want to go to strong frequency level or to the low. And this was just a throwaway question what it's about. क्या कहते हैं कि वो मिट्टी के बर्तन वो नेचर के करीब रहना and even the miswak it's also the natural. So it's like basically इनको आप 2 categories में कर सकते हो कि whenever it comes to nature it's like slow down, come back to the frequency of earth which is 7.83 hertz. And in another study they also say brain की भी ये है. And अगर आप टेक स्टफ में जाते हो तो वो आपको क्या कहते हैं chaos या हायर दूसरी हायर फ्रिक्वेंसी में लेके जा रहे हैं. Does it has any link के कि शैतान को वो पोर्टल्स ओपन करने के लिए maybe it needs artificial higher frequency?
but nature is saying something else. Then again, when you get into the simplicity concept, and it brings out that humbleness, and at the end, what is ours is nothing other than that kafan and our emal जो हमारे साथ कब्र में जाएंगे. And so the less stuff, and जमीन पे बैठने की इस्लामिक ट्रेडिशन है, और इवन नॉट, आप एंशियंट सिविलाइजेशंस में देख सकते हो. So does it is it saving us from the chaos, extreme vibrations? यानी जितनी कम चीजें होंगी एक कमरे में, उतना ज्यादा आप आपकी कम chaotic vibration, more natural vibration होगी, because earthing is the process of absorbing earth free flowing electron from its surface through the soles of one feet. And so it's like nature versus nature. And then there was this song thing in 1953. It was made an agreement by Rockefeller Foundation to change the frequency of music. So you can see here 432 hertz key frequency, which is current higher conscious, and this which is pretty good vibrations. But अगर आप इस side पे देखो 440 hertz में, so it is जो आपकी present consciousness है उसको suppress कर दिया. Like there's a lot of difference between both crystallizations. Like here is the number 9 and here is 8. And it was just a throwaway, how in Mughal architecture, I'm not sure about Safavid and in Osmania, but there must be something. But in Mughal architecture, there's a whole study के line को use किया जाता है जो उनकी buildings को, and higher ceilings को, thickness भी होती थी उनकी walls में, और आज तक खड़ी क्यों है, again. So these are the elements out of the periodic table. And then there was John, जो आपके last chapter में भी थी, and her study goes कि there is a specific position of stars जो कि affect करते हैं water को on earth पे, because earth water के अंदर भी क्या है, there are minerals. और जब वो टेस्ट किया गया, जब positions of stars certain position पे होती है, तो क्या कहते हैं ज़्यादा water soak हो रहा था by that material. And then here it's about the link between Saturn and lead, कि जब lead respond जब set first, so this is a comparison between earth, tiny earth and Saturn size. And then it was कि जब lead को, copper को, silver, steel को लिया गया, तो जब there was certain position of Saturn, तो उसने lead ने ज़्यादा soak किया हुआ by paper, but not copper, silver, steel ने कोई response नहीं show किया, ये बहुत little. So another thing कि जो metals हैं, यानी हम इस theory से, ये इस example से ये title कहता है assume कर सकते हैं कि वो resonate करते हैं. इधर हम EI से link कर सकते हैं हमारे emotions के साथ, हमारे mood के साथ. For example, aluminium के pans, the cooking utensils, उस चीज़ को आप इधर link करें. And so the Saturn, anger and lead has any element. So we can start in EI by asking कि हमारा कौन सा emotion किस वजह से अंदर trigger हो रहा है, हम किस element में ले रहे हैं, अपनी medicine में वो element ले रहे हैं, या किस चीज में. And then there was astrologers talk about the constellations, the link between constellations and personality, and that it has a link with those metal. And it's like in human personality and the metals inside us, and then those metal link with the planet. And again, in Quran, if you are interested in constellation star, one can start from Surah Tariq and Surah Najm. Okay, then this was also just a throwaway कि जो द टाइडल वेव्स के ऊपर जस्ट मून का इफेक्ट नहीं होता, इसका उस वाटर के ऊपर भी इफेक्ट होता है, स्पेशली ऑन द फुल मून एंड इवन द न्यू मून, क्या कहते हैं ट्वाइस लूनर मंथ, कि आपके जो ब्रेन के अंदर वाटर है. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. And then the writer was saying it's a meaningful theory कि जो आपके 108 earthly desire elements हैं, और कि इसका सम 9 आता है, and हमारे planets उसका भी सम 9 है. And then क्या कहते हैं, the interesting part of here is Schumann frequency जो Hard book में भी है, and it's a pretty famous, you can even Google it easily. So जो Earth की frequency that is 7.83 hertz, but the rest are pretty high. And again, this is the stable universe again too. So are there elements जो हर planet को कर रहे हैं represent? And there was a theory कि all elements on Earth were created by the high heat of star exploding in distant outer space. Some even happen. Again linking with the EI कि हम human have no clean slate. हम अपने negative emotion से बिल्कुल rid नहीं हासिल कर सकते, हम खत्म नहीं कर सकते. So we carry the memory of ancestors from distant part, और हमारे अंदर अगर उनकी positive part आता है तो हमारे अंदर negative part भी आता है, but we can assess that as well.
नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स हमारी सोल को ख़त्म कर देती हैं, ईट अवे करती हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन में अगर आप वापस जाएं तो व्हाट इज इट कि हमने नेगेटिव को कैसे ख़त्म करना है, हमने पॉजिटिव इमोशंस के साथ ख़त्म करना है। लिंक इट अगेन विद ई आई। सो कंबाइनिंग, अगर आपकी एक नेगेटिव इमोशन चल रहा है तो आप उसका ऑपोजिट पॉजिटिव वाला लाएं, व्हेन द टू वाइब्रेशंस विल बी देयर सो इट विल cancel out each other effect. So it is basically that if one is one way, so another is opposite direction, it will cancel out. And it is the same concept in medicines as well. This was, comparison of positive and negative. If we fall in start practicing gratitude, appreciating, appreciation to people around you, तो उसका opposite ये खत्म हो जाएगा. Hate, the kindness versus anger, the courage versus fear, the peace of mind versus anxiety, and the presence of light versus pressure. This was pretty interesting. For example, अगर हम resentment में से गुजर रहे हैं, तो this is how our body is, getting into knots. Or maybe even if we are sick, so that is also represented according to this book, the stagnant energy. So this is a seen in speed breakers जो आपकी flow of energy को रोक रहे हैं. तो what can we do? Like it is under quantum field, अगर उसकी example है. So let it free flow energy. And can we use the zikr here? एंड सो फॉरगिवनेस, एंड उस पर अल्लाह सुब्हान ताला का वो भी लिंक करें कि जो इस चीज़ को अल्लाह सुब्हान ताला की इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे इन दिस वर्ल्ड, तो अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत के दिन उनके लिए साए वाली जगह, वो दो स्पेसिफिक लोकेशन फॉर दोस पीपल, अल्लाह ताला उनका ऊपर उस हार्श डे पे अल्लाह ताला ने वो बादल रखा होगा उनकी. So it would be a blessing for those people. So there is again the link, कि अल्लाह सुब्हान ताला के वो attributable names को link करें यहाँ, कि अल-अफ़ू को आप कैसे practice कर सकते हैं इस दुनिया में, and how can it bring good for people. So forgiveness opens all knots of energy flow energy. So whether you pick up the Islamic concept or whether you pick up EI concept, there is something in forgiveness. And then there was in book में Saint Mary की example थी positive water की, but I am replacing it here with Zamzam. So it's basically कि आपके अंदर का मौसम वाली चीज़ है कि जब आप physical activities करके आते हैं तो even tap water sounds tastes really good. So it's about अंदर आपका कैसे emotions उसका free flow चल रहा है. So what he's saying is कि अगर आप अपनी frequency को appreciation, gratitude, alhamdulillah के साथ रखें, so water के कहते हैं can make you healthy. और अगर आप उस वाइब्रेशन को इल कर दोगे तो वो हेट पे रहेगी. वो आखिर में इस चैप्टर को कंक्लूड करता है कि H2O वाटर फार्मूला, तो 2H gratitude 2 parts. So gratitude is a giver mode, and oxygen, one oxygen, so one love part which is taking more. And then कि आपकी नीयत वाला कंसेप्ट भी लाएं. इस्लाम में नीयत का कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट. और जमजम को हदीस का मफहूम है कि आप जो नीयत करके पढ़ेंगे so it will go according to that. And then he was like, okay, इन सब चीज़ों से हम एक logically अगर think करें तो we can say कि medicines are not good for health. For a time being वो आपकी symptoms को dull कर देती है, pain से rid दे देती है, but actually it's a poison. And what's happening in there is it's happened to have opposite vibration frequency of targeted pain. अगर आपको एक organ में cell में दर्द हो रही है, so when you take medicine, so it's bringing an opposite wave which cancel out each other. So in lab में क्या हो रहा है, mixing various substances in lab, one can find, आप वो frequency find कर सकते हो, pharmaceuticals, और फिर पहले वो rat के ऊपर test होती है और फिर humans के ऊपर. That's how the medicine works. So once medicine enters in your body, it stops the pain and vibration from combined substance stop. And क्या कहते हैं, तो जब वो पेन को स्टॉप कर देती है तो वाइब्रेशन अब वो देयर इज अ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मे बी आपके वन ऑर्गन वन सेल के लिए वो ठीक है, बट आपके बाकी ऑर्गन्स या बाकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं वो उसके ऊपर साइड इफेक्ट्स ला रही है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. So it doesn't have side effects, it have direct effects. और उसके आगे ब्रूस लिप्टन की slide आएगी, you can link it there. So does a doctor, now the question asked by the writer is कि the doctor, the chemist, pharmacist, क्या ये micro level पे vibration को study करते हैं? Because अगर करेंगे that will become the holistic approach. So do we understand how actually medicine works? So कहते हैं अगर आप standpoint of vibration से देखो कि during operation फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि वो जो आपकी डैमेज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्रीट होती है. देयर इज बिकॉज
there's a much powerful frequency. For example, कोई इंसान बिल्डिंग से गिरता है, so you know अब उसकी बॉडी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है, मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 times, तो वो क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो सडन ड्रामेटिक चेंज जो आई है बॉडी फ्रीक्वेंसी में, जो अब आपको पेन की फॉर्म में फील होगी, so उसका ट्रीटमेंट क्या है, शार्प आप फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल स्क्रैपल, and its instrument, because it has the high frequency, the surgeon फिर उससे कट करेगा बॉडी, और actually what he's or she is trying to do is उस बॉडी को वापस के कहते हैं फ्रीक्वेंसी पे नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करेगा। एंड इन पास ही देन ही रिलेट्स के यू नो फिलोसोफर्स, डॉक्टर फिलोसोफर्स होते थे या डॉक्टर कम्युनिटी शैमन्स होते थे, और वो आपको तरकीब देते थे लॉ ऑफ नेचर की, यू नो कि इधर आप मिस्टेक कर रहे हो या इधर नहीं कर रहे, सो डू दिस एंड यूज हीलिंग पावर्स टू फाइंड द नेचर। And then here is कि doctor treat not just sick part of body. That's the problem कि doctor सिर्फ end result को treat करता है, but अगर वो human consciousness को भी करे, so that would be bring to us the natural conclusion, natural solution, because जस्ट कॉन्शियसनेस को अटेंड करने से ना सिर्फ डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स की रिडक्शन हो जाएगी, बट एक्चुअली देन ही वाज लाइक पीपल इन पास्ट को यूज टू गो टू फिलोसफर्स टू अंडरस्टैंड कि अपनी लाइफ में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उसको कैसे हेल्दी पे वापस ला सकते हैं। सो मे बी ही इज गिविंग अ सजेशन कि फिजिशियंस को इन फ्यूचर काउंसलर्स होना चाहिए मोर देन डॉक्टर्स एंड दैट। तो वो कहते हैं आप सिक किस तरह होते हो, आप सिक ड्यू टू नेगेटिव इमोशंस होते हो, और इज द फिर अगर आप उस कॉज को नेगेटिव इमोशन को क्यों कहते हैं माइनस कर दो, खत्म कर दो, बिकॉज वी हैव द इनेट कैपेसिटी यू नो के टू रिकवर फ्रॉम दैट इलनेस, अल्लाह ताला ने वो आपका नेचुरल सिस्टम रखा हुआ है। सो पॉजिटिव थिंकिंग को स्ट्रेंथन करो, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगी और आप रिकवर करोगे। देन ही गिव देयर इज अ डॉक्टर कहते हैं वो अपने कैंसर पेशेंट्स को माउंटेन क्लाइंबिंग से ट्रीट करता है, बिकॉज व्हाट इज एब्सेंट इन दोज देयर इज कि वो उनको और उन्हें क्या दे रहा है डॉक्टर, ही इज गिविंग द रीजन, उन्हें रीजन दे रहा है कि बूस्ट करें अपने स्पिरिट को और इम्यून सिस्टम को बाय गिविंग अ टारगेट। So is that a problem in our life as well? We don't have these targets, reason to get healthy. So here it's Bruce Lipton. You can see this documentary, and it's a story on YouTube. So what he's trying to say is that कि you know problem क्या है pharmaceutical companies के साथ, वो सिर्फ end goal को देख रहे हैं। अगर हम अपने current doctors को देखें, I hope you have a better experience, उनके साथ भी यही problem है। The thing is you are a human are in too many layers. So वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि वो प्रोसेस क्या है, you know. So जब वो ऐड करते हैं ड्रग, तो देयर इज अ मल्टीपल इंटरेक्शन, बिकॉज आपके जिसम में सिर्फ एक ऑर्गन एक टिश्यू नहीं है, इट्स अ मल्टीपल थिंग्स, इट्स ओवरलैपिंग, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर। एंड उन प्रिस्क्राइब ड्रग्स की वजह से क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, साइड इफेक्ट्स आते हैं। एक ऑर्गन को तो उसने ठीक कर दिया, एक सेल को, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट, उसकी तो फ्रीक्वेंसी खराब कर रहा है। सो दीज आर नॉट साइड इफेक्ट्स, ब्रूस लिप्टन इज सेइंग दीज आर द डायरेक्ट इफेक्ट्स जो लोगों के साथ इश्यूज करें। So the coming back to the writer, he's saying this is all the layers, you know, of human being. A physically entity, emotional, mental, intellectual, social, spiritual, and many more. You know, so if everyone starts seeing a human being like that, so that is the right approach. So what is holistic? It's a parts are interconnected, cannot only be explained only by reference to whole, you know, part to whole, whole to part wala concept, and treatment of whole person, you know, एक इंसान आपके पास अगर आया तो आप इन सब चीजों को treat करो, and just because we don't see these stuff, all these stuff doesn't mean that these are absent. So open to importance of the soul, and which is the right move. And next was, yeah, this was just to give the concept of, you know, कि if Allah subhanahu wa ta'ala को अगर आपने call करनी है, so how would you do this is the Allah subhanahu wa ta'ala's number, इस तरह हम एक दूसरे को call text करते हैं 24434, and this was the earthing concept, you know, आप किस तरह वो कर सकते हो सुबह के times, या so that is, you know, आप shoes उतार के walk कर लो, you know, या barefoot walk कर लो, या आप क्या कहते हैं बैठ जाओ जमीन पे, you know, the way the meditation
goes, yeah, क्या कहते हैं, sit around a tree. There is a whole concept around that, or let your body touch the earth. And then again in the prostration, what is happening there? Maybe it's like, एक तो ये concept है कि आपके shoulders के sin सारे झुक जाते हैं, तो हमें रुकू और सजदे में ज़्यादा time spend करना चाहिए, and take our namaz flow. And then क्या कहते हैं, the points, the 7 points जो आपके ज़मीन के साथ लग रहे हैं. And so yeah, and then the fajr concept, prayers के बारे में हमारा concept क्या है? It's like we are losing it. And the thing is, हम अपने मोबाइल फोन्स को तो चार्ज करना याद रखते हैं, but what about our spiritual life? उसकी बैटरी तो नीचे जा रही है. So this is again the fard namaz. At least we should try that. And the trick for that is that कि for starting अगर हम नहीं पढ़ते तो हम वुजू करने की कोशिश करें, शैतान बहुत आपको बीच में वो गलाएगा. And before namaz, अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी कम करें, because हम इतने डोपामिनिक हो चुके हैं अपने लाइफस्टाइल से. नमाज के एंड तक थोड़ा सा वो नेचुरल सुकून आने लगता है, बिकॉज एक्चुअली नमाज वाज रिबिलियस टू दैट कंटेंटेड सोल की जर्नी थी. सो आर नमाज इज लाइक दैट. So again, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, call upon me, I will call upon you. And then these are the questions again, just a thought provoking, consciousness and the soul, are they two different things or not? Then again, questions are, what is consciousness and what is that mind? And what's the difference between mind, consciousness, and the soul? So and then the no problem can be solved from the same consciousness that created it. EI से से जोड़े, so you have to change that set of your set of mindset को आपने change करना है. जिसने problem बनाई है वो solution नहीं कर सकता. So again, the question is, do you surrender a universal mind greater than your own? Of course, or maybe not. So it's your answer to give. And then human body के वो बात करता है कि actually human body in one word is water. Again, air भी है, but here it's linking the water. And जो consciousness है आपकी, that is soul. So we need to use those क्या कहते हैं methods जो आपके water को कहते हैं flow कराएं smoothly, organic way, versus medical methods. And there's a whole research on hijama. I don't know why we don't talk about it, because it is the only one so far that I have found कि you don't have to be a sick person. आपको बीमार होने की शर्त नहीं है कि आप जाके hijama कराओ, as compared to medicines या other medical methods. एंड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको अपनी लाइफ में किया है, इवन एहराम में भी किया है. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक पे करवाया हुआ है, अपने नीज पे करवाया हुआ है, आई गेस बैक पे भी करवाया हुआ है. And there are much more to study on it. So maybe, and there is also one hadith जिसका मफहूम है कि there is, आपकी neck के पीछे, आपके shoulder blades के बीच में there is one point जो आपकी 72 diseases of human body का solution है. Okay, so all about keeping soul. The one point line is of this chapter is अपने soul को unpolluted रखें, अपने water को अंदर से उसकी pollution खत्म करें, and that would be the solution. So imagine water inside आपके अंदर form crystals करा, then you will become conscious. आप उसे क्या सुना रहे हो, किस environment में बैठ रहे हो. So throughout your body, that's happening each and every second. And then again, he's going back to what people is. This is like that water molecule H2O. तो हमारे पास one mouth है, to speak. So he's relating it with the oxygen and that love, and it is active energy in receiving mode. But the two hydrogens, those are our two ears and two hydrogen atoms. So it is multiplied by 2, double gratitude, double alhamdulillah. And again, Surah Fatiha is again starting with alhamdulillah. So is there a link? And then this is a passive energy. It's an unconditional, it's a powerful and more greater influence vibration as compared to the love frequency. So alhamdulillah, thanks, the gratefulness, the appreciation, the bless, all the synonyms of it you can counter it. Like it's in one line, it is the balance between both. And then the problem right now हम लोगों के साथ क्या है कि this human race are focusing or being drawn to stuff जो कि physical world है, and we are just not physical. अभी we just study that in a holistic way. So the thing is, जो चीजें हमें नजर नहीं आती, for example character हमें नजर नहीं आता, soul नहीं हमें नजर आती, that आखिरत, कब्र, judgment, these things. So that does that mean कि वो चीजें exist ही नहीं करती? So it's a question to ourselves. And again the problem is that egocentrism, the capitalist education system, just मैं हर किसी को पीछे कर दो, but मैं top पे आ जाऊं. And absence of, maybe is it absence of the तरबिया जो फितरत पे होनी चाहिए थी, and the competition and the money and status. So is that a solution, the money tree? So why everything we following
right now in our lifestyle is going opposing the natural way. And then he's concluding, let's go back to the last century. What's going on there is, no, it's not 21st century, 20th century. World War I and World War II, scientists क्या कर रहे थे? And क्या कहते हैं, industrialization हुई. Again, you can relate it with the postmodernism and modernism. If you want to go into the history, it has a great links. And but the thing is, let's start connecting the dots, observe the pattern. You don't have to be a scientist to connect those dots, observe those patterns. And he's putting at the end, are all these things are coincidences? Just do you think? He says human में, no end of conflict, but one thing आप last century के बारे में कह सकते हो, it's all about fighting, warfare. So what is that? Understand life concept, so you will understand, visit hospitals, the jail, and the cemetery to understand the point of view in health. Visit the orphanages भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि हम अपनी blessings को देखें, और इस्लाम का वो concept इधर relate कर सकते हो कि अपने से नीचे देखें. फिर आप वो कंपटीशन, जेलसी और उस चीज में नहीं, और डेफिनेटली आप अल्हम्दुलिल्लाह की स्टेट में जाते हो. एंड देन अगर आपने फ्रीडम वाली कंसेप्ट को समझना है, सो विजिट द जेल. Again, you will go into the alhamdulillah stage, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given you so far in your life. And they always say what you wish is always, या जो आपको अपनी लाइफ में मिला हुआ हमेशा किसी और की दुआ का ही पार्ट होता है. So again, that dua concept, alhamdulillah. And symmetry concept, what you will realize कि life is worth nothing, not in a pessimism sense, but जो हम अपने आप को मैं कुछ हूँ. Because when you start understanding the cosmology, this universe and Allah subhanahu wa ta'ala, you just feel, you're one grain of sand in that desert. And the most important concept was कि the ground we are walking today, tomorrow we will be under it. हमारी वो roof होगी. अगर अभी हमारे पाँव के नीचे है तो कल वो हमारे ऊपर होगी. So again, जो कब्र आपको 40 times a day याद करती है. So how many times do we remember that concept? And this was again Dr. Joy Dispenza. He was saying कि जब आप सुबह उठते हो, for example right now अभी हम उठे हैं, so क्या होता है वो, that is आपकी waves, आपके brain की वो waves change हो रही हैं, delta to theta then alpha to beta. but जब आप रात को सोते हो तो वो कितने, यानी सुबह अगर वो up जा रही हैं, रात को वो down जाती हैं, back to beta to alpha then theta to delta. and क्या कहते हैं, it is basically जब आप, यानी अब हम सुबह उठ चुके हैं, या even weekdays or whatever weekends, it's like back going to the conscious awareness. यानी अभी अब हमें realization होने लग गई है, this space and time, अब ये करना है वो करना है, I'm in this space at this time. And actually in alpha theta stage पे क्या होता है, these are pretty little bit confusing, इस पे आपको और books चीजें पढ़नी पड़ेंगी, but I am telling you what he's talking about here. Alpha जो state है आपकी, उसमें क्या कह रहे हैं, आपकी एनालिटिकल फैसिलिटीज हैं वो सप्रेस हो जाती हैं. यू स्टार्ट बीइंग इन अ रिलैक्स स्टेट, डे ड्रीमिंग, और इनएबिलिटी हो जाती है फोकस करने के लिए. एंड द फ्रीक्वेंसी देयर इज 9 to 13 हर्ट्ज. और थीटा इज दैट हिप्नोटिक स्टेज 4 to 8. एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि 7 years से नीचे जो बच्चे होते हैं, दे आर इन दिस स्टेज. जब वो कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल गर्ल्स आर इनटू imaginary concept के चाहे there is no one, but they are just making that with those toys, and or they are thinking like Harry Potter, that's broomstick will make them fly. इसको उस चीज से भी relate कर सकते हैं. So basically what he's saying, these are the two doors, जो consciousness और subconsciousness के अंदर है. Analytical mind आपका सब separate हो रहा है during this beta stage. And then so once your analytical facilities are suppressed, you can किसी भी इंसान को आप program कर सकते हो कि वो कुछ भी कर सकता है. So that is pretty interesting. More consciousness needs to be. And at the end, can we say like this whole about this writer and this book, what it's our choice, whether आपने nature को choose करना है या आपने unnatural stuff को choose करना है, your choice. And at the end, जज़ाकल्लाह खैर. Thank you. समीना जी, आप कुछ कह रही थी उस कंसेप्ट के ऊपर. हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि इस बुक में जहाँ ये वाटर को आपको वाटर की बात बता रहा है कि वाटर के क्रिस्टलाइजेशन को किस तरीके से प्योर करना है, आपकी सोल की प्योराइजेशन क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस को किस तरह से डील करना है. तो वन थिंग कि क्योंकि वाटर को कर रहा है तो ही से वाटर में दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और ठीक है. तो वो एक जो मॉलिक्यूल है उसको लव ले रहा है, और दूसरे जो दो मॉलिक्यूल है उसको वो ग्रैटिट्यूड ले. आप पहले भी न्यूरो साइंस से लास्ट टाइम भी हमने कनेक्ट करके बताया था कि ग्रैटिट्यूड की
इमोशन है, ये ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है, वो आपको वो जो हाइपरमैन सेड कि बेसिकली एक हैक है, ही सेड इट्स नॉट अ हैक। जब आप ग्रेटिट्यूड का इमोशन प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो जितनी भी केमिकल केमिस्ट्री आपकी न्यूरो की है, वो सबसे बेस्ट बैलेंस फॉर्म में परफॉर्म होती है अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहें। तभी अल्लाह में बार बार आपको कहता है मेरी किस किस नेमत को probably I'll become a तुका last time we did that. Basically he said कि अगर आप gratitude में हैं, ठीक है, and then another scholar said कि basically cause and effect की theory थी, लेकिन अब effect and cause की theory। आप पहले gratitude रखें, effect खुद ब खुद बनता जाएगा, cause खुद ब खुद बनती जाएगी। एंड दैट्स हाउ ही सेड कि बेसिकली अगर और जो ग्रेटिट्यूड है ये पैसिव इमोशन है। पैसिव इज मीन नॉट अनकंडीशनल, ठीक है। और लव जो है वो एक्टिव है। दैट्स हाउ ही कनेक्टिंग दैट कि आप बेसिकली अपनी जो एक्टिव एनर्जी जो है ना लें, और अपनी वाइब्रेशंस को जो है वो पॉजिटिव, अगर आप खुद पॉजिटिव रहेंगे आपकी वाइब्रेशंस जो है, क्योंकि मैंने आप पहले भी कहा कि वाटर जो है वो वाइब्रेशन में जा रहा है, वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी में जा रही है, फ्रिक्वेंसी फिर आपको लेके जा रही है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड तक।